Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padat Vigyan. So students, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ case study based question को discuss କରିବା from the chapter electric potential. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ question ଟା ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ 2024 ମସିହାର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଥିଲା. The set code is 55/3/1. ତ ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ question ଦେଇଛି and how to solve these questions. So let's begin. The question कौन दीजिए थी? The figure shows four pairs of parallel identical conducting plates separated by the same distance 2 centimeter and arranged perpendicular to x-axis. The electric potential of each plate is mentioned. The electric field between a pair of plates is uniform and normal to the plates. तो क्वेश्चन में कौन कहला ना चारटा डायग्राम देछि डायग्राम 1 डायग्राम 2 3 and 4 and each diagram रे दुईटा parallel conducting plates अछि having identical sizes and सबु plate रो potential mention अछि -70 volt -50 volt then -50 plus 150 then -20 volt plus 200 volt -100 volt -400 volt and all these plates are perpendicular to the x-axis. तो ये लिखा है ये डाउच x-axis, ये डाउच y-axis, ये डाला z-axis. ठीक है जी. तो ये डायग्राम को हमें देखिले भल से and each plate रो केते छि potential तको भी देखिले. Now let us solve all the questions. तो first question कौन पचाला? For which pair of the plates is the electric field E vector along I cap? I cap माने कौन? I cap होछि towards right. सो डायग्राम रे कहि दैछि आई कैप होछि टुवर्ड्स राइट. तो हमें देखिबा ए जो चारटा डायग्राम दैछि एंड ईच डायग्राम रे वी हैव पेयर ऑफ प्लेट्स. देखिबा जे को पेयर ऑफ प्लेट्स पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन टा आसीबो एलो आई कैप माने टुवर्ड्स राइट. तो एक क्वेश्चन केमते सॉल्व करबा? तो मन रखा हम जानि छै जे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम high potential to low potential, from high potential to low potential, from high potential to low potential. ठीक है ता माने जेहेतु से क्वेश्चन पचार जे को पेयर ऑफ प्लेट पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन ता आसीबो एलोंग आई कैप ता माने टुवर्ड्स राइट आसीबो. इट मींस जदी इलेक्ट्रिक फील्ड ता रहिची फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ता माने लेफ्ट प्लेट रो पोटेंशियल शुड बी हाई and right plate potential should be low, so that electric field will be directed from high potential to low potential বা from left to right. तो अबे हमें चेक करिबा each diagram रे जो pair of plates अछि हमें चेक करिबा जे को pair पई बा को diagram रे left plate अछि high potential रे और right plate अछि low potential रे. तो आको में चेक करिबा देखि परिबा जे फर्स्ट डायग्राम रे -70 -50 अछि. तो -70 होछि लो एज कंपेयर्ड टू -50. तो एटा हबनी. In the second diagram, -50 or plus 150 अछि. Again, the left plate is at low potential, right plate is high potential. तो एटा भी हबनी. In the third diagram, -20 और कते अछि plus 200 अछि. तने again left अछि low potential रे, right is high potential. तो एटा भी हबनी. Look at the fourth option. The left plate is at -100 volt and the right plate is at -400 volt. So -100 is definitely greater than -400. तामाने in the fourth diagram the left plate is at high potential and the right plate is at low potential, so the electric field will be from high potential low potential माने from left right आसीबो तामाने एलएम आई कैप आसीबो. तो एबे हमें ऑप्शन चूज करिबा. ऑप्शन डी हबो करेक्ट वन. माने फोर्थ डायग्राम रे जो दिरा प्लेट अछि ता पय इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो एलो आई कैप बा एलएम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. Now let us go to second question. Condition: an electron is released midway between the plates of pair I pair 4. तमने fourth diagram में जो दिरा plate अछि ता मझिरे हमें गोटे will release an electron, then it will dash move along I cap at constant speed. Now move along minus I cap at constant speed. Now accelerate along I cap. Now accelerate along minus I cap. तो ये एक क्वेश्चन आंसर कोन हबो? देखो आमे जानि छै जे जदि एमती जो दुटा प्लेट अछि इन द फोर्थ डायग्राम एटा अछि -100 volt रे and the right plate is at -400 volt and in the question it is given that the electric field between a pair of the plates is uniform and normal to the plate.
ता माने ए जो दुटा प्लेट अछि ता भितरे इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो व्हिच इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आमे जानिछे जे इफ वी release any charge particle inside an electric field, then the charge particle will experience a force and hence it will be accelerated. The mean if you release the electron in between the two plates, then the electron will be accelerated. The mean option A और option B के भी possible हबनी. लिखा जी जे move along I cap at constant speed एटा भूल किंबा move along minus I cap at constant speed एटा भूल. The electron will be accelerated. But the question is whether the electron will be accelerated along I cap na along minus I cap. ताको केम जानिबा. तो मन रखो जदि आमे गोटे प्लस चार्ज नउचे, if we take a positive charge, then the positive charge will be accelerated along the electric field. But a negative charge will be accelerated opposite electric field. So remember this point. A negative charge is accelerated opposite to electric field. The mean electron is negative charge. So if we release the electron in between the two plates, then the electron will be accelerated opposite to electric field. Now jehetu electric field अछि along I cap, the mean the electron will be accelerated along minus I cap direction. So option D will be the correct one. Now we'll go to the next question. Let V naught be the potential at the left plate of any set taken to be at x equal to 0 meter. The potential V at any point between the plates of that set can be expressed as dash. तो ये जो चार्टा डायग्राम देछि, each diagram में हम पाखरे दुईटा प्लेट अछि, we have a pair of plates. तो से कौन कहला ना आमे जेकोनोसी गोटे सेट नबा, चार्टा सेट अछि, आमे जेकोनोसी गोटे सेट नबा, से सेट रो जो लेफ्ट प्लेट अछि ताको में अज्यूम करिबा जे that plate is situated at x equal to 0. ठीक अछि. Then and say left plate रो potential को जदि में v naught बोली आमे अज्यूम करूची. Suppose assume that the potential of the left plate is v naught. Then से कोन पचला जे आमे ए जो दुटा प्लेट नै जदि एटा x equal to 0 रे अछि तो एटा केता आसीबो x equal to 2 cm आसीबो because क्वेश्चन कोन देछि ना the separation between the two plates in all the diagrams is 2 cm. ता माने प्रत्येक डायग्राम रे दुटा प्लेट अछि से दुटा प्लेट भितरे सेपरेशन केते अछि 2 cm अछि. ता माने जदि लेफ्ट प्लेट x equal to 0 cm अछि then the right plate को थिबो x equal to 2 cm थिबो. से पचाला जदि आमे अज्यूम करिबा जे लेफ्ट प्लेट रो पोटेंशियल केते अछि v naught अछि, then if you choose any point in between the two plates, suppose मैं एठी गोटे पॉइंट चूज कली, तो एई पॉइंट रो पोटेंशियल को आमे केमते एक्सप्रेस करिबा. माने करे एई जो पॉइंटटा लेफ्ट प्लेट टू x डिस्टेंस दूर अछि, तो जदि x इक्वल 0 माने ओरिजिन जदि पोटेंशियल v naught आसुची, then से लेफ्ट प्लेट टू किछि दूर रे बा x दूर रे जदि गोटे पॉइंट हमें चूज करबा, एनी पॉइंट हमें एठी नहीं परिबा, एठी नहीं परिबा, you can take the point at any point but in between the two plates. मैं बाहर नबानी, we will take the point in between the two plates. जदि मैं एठी पॉइंट चूज करछि at a distance x, तो सेही पॉइंट रे पोटेंशियल को हमें केमते एक्सप्रेस करि परिबा. तमने जो चारटा ऑप्शन देछि a b c d, ए चारटा ऑप्शन रे चारटा इक्वेशन देछि. कोन देछि गोटे कहिछि v equal to v naught plus alpha x, एटा कहला फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड रे कोन कहला v equal to v naught plus alpha x square. थर्ड कोन कहला v equal to v naught plus alpha x to the power half. और फोर्थ ऑप्शन कोन कहला v equal to v naught plus alpha x to the power 3/2. से पचने जो चारटा इक्वेशन लिखा हिची, which equation will correctly express the potential as a function of x. तो हमें देखिबा जे ए क्वेश्चन में केमते सॉल्व करिबा. देखो एथिरे हमें गोटे कांसेप्ट यूज करिबा कोन ना हमें जानि छे जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड केते होची ना dv by dx. ठीक अछि. जदि potential थिबा फंक्शन ऑफ पोजीशन, then by finding the gradient of potential we can calculate the magnitude of electric field. And हमें already जानि छे जे in the question it is given that the electric field in between the two plates is uniform by constant. ठीक अछि. तो हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाउचे इन बिटवीन द टू प्लेट्स दैट शुड बी कांस्टेंट. एंड हमें जानछि कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड कोन ना एला dv by dx. ठीक अछि.
तो आम पाखे चार्टा इक्वेशन अच्छी वोल्टेज रो तो एबे हमें कौन करबा आमे ईच केस रे देखिबा dv by dx केते आसुछ आ जो केस रे dv by dx टा कांस्टेंट हे जिवो that option will be the correct one because electric field is uniform, the electric field is constant and electric field is given by dv by dx. तो जदि हमें dv by dx बाहर कर दो सबु माने इक्वेशन को नेकी तो जो केस रे dv by dx टा x रो फंक्शन हबो नाही तो से केस में को देखिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोन हबो यूनिफॉर्म हे जिवो तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन जदि हमें dv by dx करिबा तो कोन हबो एटा ना d by dx of v naught plus alpha x so v naught is constant alpha भी कोटे constant तो एटा केते जेटा हे जिवो d v naught by dx plus alpha जे तो constant अछि ताके बाहर नै जिवो dx by dx कर देबा तो एटा 0 हे जिवो because v naught is constant quantity then dx by dx is 1 तो alpha into 1 तो alpha आसीला तो हमें कोन पाइले एठी ना फर्स्ट इक्वेशन पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड केते हे alpha हे जाउछ and alpha is a constant quantity it does not depend upon the position but जदि हमें बाकी जो तीनटा ऑप्शन अछि v equal to v naught plus alpha x to the power half किबा v equal to v naught plus alpha x square किबा v equal to v naught plus alpha x to the power 3/2 हम ए तीनटा ऑप्शन पई बाहर करबा dv by dx केते होस्ची देन तम निजे भी ट्राई करि परिबो देखिबो जे इलेक्ट्रिक फील्ड टा बा ए जो डेरिवेटिव टा हम जो dv by dx बाहर करबा that value will be a function of x केवल फर्स्ट ऑप्शन कोन होची ना हम जे डेरिवेटिव करूजे हम गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी पाउचे अल्फा पाउचे ता माने जेहेतु हम देखले कोन ना केवल फर्स्ट केस पे कोन होची ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू टा यूनिफॉर्म आसुची देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बाकी जो तीनटा अछि दे आर रॉन्ग बिकॉज़ हम जे बाकी तीनटा ऑप्शन को देखिबो देन their derivative with respect to x will be a function of x ठीक है but electric field is constant uniform that means dv by dx should be uniform next question देखिबा fourth bit एथिरे गोटे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देइछि ने यू हैव चॉइस आइदर तमे फर्स्ट बिट ए करि परिबो किबा बिट बी करि परिबो तो बिट ए कोन देला let e1 e2 e3 and e4 be the magnitudes of the electric field between the pairs of the plates 1 2 3 and 4 respectively then हम एठी अरेंज करबा इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू को इन डिसेंडिंग ऑर्डर हम देखिबा जे को केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होचे को केस रे मिनिमम होचे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू बाहर करिया पई अगेन हमें यूज करबा ए फार्मूला dv by dx तो dv माने कोन dv माने होची पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स तो ईच डायग्राम रे दुटा प्लेट अछि हम देखिबा जे से दुटा प्लेट भितर केते अछि पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन व्हाट इज dx dx is the separation between the two plates तो सबु केस रे according to the question कोन देछि ना the separation between the two plates for all the diagrams is same which is 2 cm तो ताकि हम लिखि परिबा 2 into 10 to the power minus 2 meter ठीक अछि तो एबे हमें एई डाटा को यूज कर देखिबा जे each pair पई each diagram रे इलेक्ट्रिक की वैल्यू केते आसुची सो लुक एट द फर्स्ट डायग्राम तो फर्स्ट डायग्राम देखिबा जे जो दुटा प्लेट अछि -70 वोल्ट और -50 वोल्ट रे अछि तो एमान भितर पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीबो एटी 20 वोल्ट रो गोटे डिफरेंस आसुची द सेकंड डायग्राम -50 और एटा केते अछि +150 अछि त माने 200 वोल्ट रो डिफरेंस अछि -50 और +150 भितर डिफरेंस केते 200 वोल्ट इन द थर्ड डायग्राम -20 और 200 अछि त माने 220 वोल्ट रो गोटे डिफरेंस अछि इन द फोर्थ डायग्राम -100 and -400 तमने 300 वोल्ट रो ते डिफरेंस अछि तो 20 200 220 and 300 ठीक अछि त देखु छै एठी जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते dv by dr ठीक अछि तो जेहेतु dr ता सेम अछि बा dx सेम अछि समस्त पे केते 2 सेम अछि सो हमें देखले कोन एठी ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड होची केते ना dv by dx बट जेहेतु कोन dx ता कांस्टेंट अछि तने हम या कहि परिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बा कोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस त माने जो पेयर पई पोटेंशियल डिफरेंस ता मैक्सिमम थिबो से पेयर पई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आसीबो तमे देखिबा यदि ए जो चारटा जो पेयर अछि चारटा पेयर पे कोन फोर्थ डायग्राम रे 300 वोल्ट रो वोल्टेज अछि
तापरे थर्ड डायग्राम रे 220 वोल्ट रो वोल्टेज अछि, देन 200 वोल्ट रो अछि, देन 20 वोल्ट रो अछि। तमे ऑब्वियसली जदि हम याकू E1 कहूचे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट केस रे, एपटे सेकंड केस रे E2 कहूचे, थर्ड केस रे E3 कहूचे और फोर्थ केस रे E4 कहूचे, देन आमे कोन देखिबा ना जो केस रे पोटेंशियल डिफरेंस अधिक आसीबो से केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिक आसीबो। ता माने E4 हबो मैक्सिमम, तापर आसीबो E3, तापर आसीबो E2, तापर आसीबो E1। तले which option will be correct? It has to be option C, E4 greater than E3 greater than E2 greater than E1। ठीक है, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। देन तार अल्टरनेटिव क्वेश्चन कोन देछि, बीट बी कोन देछि ना, an electron is projected from the right plate of set 1 directly towards the left plate। देखो सेट 1 माने सेट 1 रे केते अछि -70 वोल्ट अछि, -50 वोल्ट अछि, तो डायग्राम ड्रा कर देबा एठी। तो -70 वोल्ट असला लेफ्ट प्लेट एंड -50 वोल्ट असला राइट प्लेट। ठीक अछि, तो से कोन पचला एठी ना, an electron is projected from the right plate of set 1। ता माने आमे एठी कोन करबा ना, ई राइट प्लेट रु आमे गोटे विल रिलीज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक अछि, बा विल प्रोजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन directly towards the left plate। It just comes to rest at the plate, but at the left plate the speed with which it was projected is about dash। एते कोन कहना, टेक E by m रेशियो केते कहिछि, हमें E by m को केते पुट करबा, आको पुट करबा 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी रे पुट। देखो ए क्वेश्चन हम केमति सॉल्व करबा, हमें जानि छे जे गोटे नेगेटिव चार्ज इट गेट्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेट 1 रे आमे जो दुरे प्लेट पाइचे -70 वोल्ट और केते -50 वोल्ट रो, त माने राइट प्लेट अछि एट हाई पोटेंशियल एंड द लेफ्ट प्लेट इज एट लो पोटेंशियल। त माने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन केमते आसीबो, हाई टू लो पोटेंशियल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जदि हमें इलेक्ट्रॉन को एठी रेस्ट में रिलीज कर दबा, ओके, इफ वी रिलीज द इलेक्ट्रॉन at rest from the right plate, ताहले कौन होबो ना, सी आपे आपे केबे भी लेफ्ट प्लेट को जाई परिबो नाही, बिकॉज नेचुरली इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम लो हाई पोटेंशियल। तो जदे मैं चाहू छे जे इलेक्ट्रॉन आसकी लो माने लेफ्ट प्लेट रे पहुंचबो, ता माने यू हैव टू गिव सम काइनेटिक एनर्जी, then only the electron will spend its kinetic energy and it will reach at the right plate, sorry left plate। ओके, तबे देखिबा जे जदि हमें ताकू v अमाउंट रो स्पीड देचे, ठीक अछि, सपोज हमें ताकू v स्पीड देचे, देन हाफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी कारो इलेक्ट्रॉन रो, and that kinetic energy will be spent to do work against the electric field। ठीक अछि, तो एबे कोन होची ना, इलेक्ट्रॉन ता मूव करूची -50 वोल्ट टू -70 वोल्ट को मूव करूची। तो एबे वर्क डन केते आसीबो, तार फॉर्मूला कोन ना, W इक्वल केते हुए Q इनटू डेल्टा V हुए, मैं जानि छै चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एठी चार्ज केते अछि, चार्ज अछि E माने माइनस पुट कर दबा, डेल्टा V केते अछि माने फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, -70 -50 हेला, तो एटा केते हेजबो -E इनटू ता जो -70 प्लस 50 माने -20 हेला, बा एटा केते एटा हेजबो E इनटू 20। ठीक अछि, तो एतिक अमाउंट रो वर्क करे के पड़िबो। ओके, तो ए वर्क करियो के द काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर। अच्छा देखो से कोन कहै छै ना, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रीचेस एट द लेफ्ट प्लेट इट कम्स टू रेस्ट, त माने द एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज स्पेंट। ठीक अछि, त माने द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी केते अमाउंट चेंज होला, हाफ mv स्क्वायर थिला, एंड फाइनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन रीचेस एट द लेफ्ट प्लेट इट बिकम 0। तो डेल्टा k केते आसीबो, डेल्टा k आसीबो हाफ mv स्क्वायर आसीबो, and this is nothing about the work done। So this change in kinetic energy must be equal to this work done। तो हम एठी कोन लिखिबा ना, E into 20 केते हबो हाफ mv स्क्वायर हेजिबो। तो हमकू पता छै केते स्पीड रे ताको में रिलीज करथिबा, तो v स्क्वायर केते हेजिबो
एसकी पटे 2 मल्टीप्लाई हे पड़े तो m डिवाइड हो तो e by m रहले पड़े तापर 20 थला 2 मल्टीप्लाई हे जिवो तो कते जो 40 हे जिवो तो v स्क्वायर में केते पाइले e by m into 40 पाइले तो इन द क्वेश्चन कौन कहिछि ना e by m को हमें केते पुट करबा 1.76 into 10 to the power 11 पुट करबा तो आपको मैं कौन लिखबा एठी ना v स्क्वायर इज इक्वल टू 1.76 into 10 to the power 11 into ता 40 हे गेला तो एबे v केते हबो ना एबे देखो ये जो 40 अछि इनको कौन करिब ना 1.76 से गोटे 4 मल्टीप्लाई कर देबी एंड ये जो गोटे 10 बंची गेला ताको एते मल्टीप्लाई करले 10 टू द पावर 12 हे जिवो तो आर मो रूट ओवर नै जिवि ठीक अछि तो हमें देखिबा एबे हिसाब करिबा कैलकुलेटर रे केते वैल्यू आसु जारो तो 1.76 into 4 करले इट आसीबो 7.04 तो 7.04 into 10 to the power 12 तार स्क्वायर रूट अछि so square root of 7.04 will be how much it will be 2.65 तापर एटा 10 to the 12 अछि तार केते रूट ओवर एटा जो 10 to the power 6 हे जिवो तो देखो ऑप्शन कोन अछि 2.6 into 10 to the 6 तो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर ता माने the electron was projected with the speed of 2.6 into 10 to the power 6 meter per second so that when it reaches at the left plate it just comes to rest ता माने जहां भी थिला kinetic energy the entire kinetic energy was spent to work against that electric field. So students, I hope that मैं जहाँ से वो question discuss कले the solution is very clear to you and ए type of questions तमे exam रे पाइबो तो तमे देखि पारथबो जे question रो level टा difficult नहीं हमें जहाँ भी सब फॉर्मूला पढ़ीचे मोर टेक्स्ट बुक रे बा एनसीईआरटी बही रे अछि हमें सेही फॉर्मूला यूज करबा खाली टिके हमको वी हैव टू बी स्मार्ट एंड सब कांसेप्ट को मेदी माने माइंड रखितबा देन बहुत इजीली हमें सब क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा तो ठीक अछि हमें पुन देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे विथ ए न्यू टॉपिक सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय